Rahul Gandhi will remain disqualified as a member of parliament after the Gujarat High Court today rejected his request to put on hold his conviction in the defamation case. He will now approach the Supreme Court. That's now his hope with this request to put it on hold. Now, the High Court decision is a huge blow to the Congress as it plans a strategy for a series of upcoming polls in various states, including the 2024 national election. The Gujarat High Court in its order today said there are also pointed out how there are at least 8 to 10 other criminal defamation complaints that are pending against Rahul Gandhi. So the justice speaking about that, the former Congress chief will not, however, be going to jail. Remember, as his 2-year sentence had been put on hold by the court previously. Well, let's go across to Sunil Prabhu now for more. And Sunil, tell us about the reactions coming from the Congress party. Also, the justice said that staying conviction is not a rule and the same must only be exercised in a rare case. So, making all these points as he rejected Rahul Gandhi's plea. Well, there is definitely a huge crowd here gathering as we see, as the Congress people congregate here. What are you planning to do now that legally Rahul Gandhi has very less options left, Mr. Srinivas? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास है, हम कानून तौर पे लड़ाई लड़ेंगे और साथ में सड़क पे भी उतर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये सारी चीज़ क्यों हुआ है, सबको पता है। डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ, सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसका है, तब से ये सारी कहानी स्टार्ट हुआ है। और ये लोग कितने भी कोशिश करें, ये भारत देश है, ये तानाशाही सरकार और इनका अहंकार को ख़त्म देश का जनता करेगा। अभी कर्नाटक में हुआ है, अभी आने वाला 5 राज्य में होगा और लोकसभा में देश का जनता सही सबक सिखाने का काम इन लोगों को करेगा। But Gujarat High Court has very categorically made an assertion that this is Rahul Gandhi is a serial offender in terms of defamation. So how do you take this forward? And that is why it is not correct to you give him a reprieve at this case. देखिए, वो जो भी कोर्ट का है, मैं उसको लेके टिप्पणी नहीं करता हूँ। हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है, बट ये सारे जो चीज़ स्टार्ट हुआ है वो सबको पता है। जो स्टे हुआ था केस, तुरंत स्टे वैकेंट हो जाता है, वैकेंट के बाद शॉर्ट नोटिस मिल जाता है, शॉर्ट नोटिस के बाद जज चेंज हो जाता है, जजमेंट आ जाता है। तो 1 महीने में घर छीनने का कोशिश किया, कितने मीन्स ये सारी क्लियर है। तो इस पर कोई किसी को जनता भी इतना ये नहीं है, तो लोग समझदार लोग हैं। तो जवाब तो 24 और आने वाला 5 राज्य का चुनाव में इनको लगेगा झटका। अभी कर्नाटक में इतनी बड़ी झटका लगी है, तभी भी इन लोगों को अकल नहीं आया, तो अभी और बड़े-बड़े झटका इन लोगों को लगेगा। And you say you are going to go to the street. How are you going to take that? देखिए, ये किस तरीके का इन लोग ने पिछले 9 साल में बेरोजगारी सोच नहीं सकते। 45 साल में पहली बार इतनी बड़ी लेवल का बेरोजगारी। बीजेपी है तो महंगाई, माँ शब्द भूल गया इन लोग ने, तो माँ शब्द महंगाई भूल गया, माँ शब्द मणिपुर भूल गया। 60 दिन हो गया, वहाँ नहीं जाने के लिए इनके पास समय नहीं है, ना उसको लेके बात करने के लिए इनका कोई वक्ता तैयार नहीं है। ये लोग जहर फेंकने में इसका पास समय है, तो असली बात में बात करने के पास इनके पास ये नहीं है। इनका जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इनका जो पात्रा गीतरा जो भी है, ये लोग कुछ भी कर ले, थोड़े दिन बचा है, तो बाद में दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा। सत्य को परेशान कर सकते हैं, आप पराजित नहीं कर सकते। हम विश्वास रखते हैं वो राहुल जी के साथ किस तरीके का इन लोग ने किया है। राहुल जी ऐसे व्यक्ति है जो पदयात्रा स्टार्ट किया तब भी कोई कसर नहीं छोड़ा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जो 120 लोगों के साथ लाखों लोग आए। दिल्ली आते कोरोना भी लेके आया, तो राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी वाले जल रहे थे, अभी भी जलन हो रहा है। तो आप लोग करो तानाशाही, अहंकार कितना करना करो, उसका सारी मिल के बदला देश का जनता देगा। So here you have it. You can see the kind of reaction that is coming from the Congress headquarters, from the Youth Congress president. Politically, they will continue to make that political claim, but legally, we'll have to wait for Mr. Abhishek Singhvi, who I had spoken to earlier, saying that very categorically that they will go to the Supreme Court and as they're studying this entire case, but prima facie they feel that the Supreme Court will definitely intervene. That's the last legal reprieve for Rahul Gandhi before he actually will have to face that full disqualification that is taking place.
That's right, Sunil. Thanks so much for joining us. With that, a Congress press conference at around 3 o'clock is expected. There have been some reactions. Randeep Singh Surjewala calling it a travesty of justice, while Shehzad Poonawala, the BJP spokesperson, calling it Satyamev Jayate. Let's just listen into some of the reactions that have come in. Well, it is very difficult for me to comment on the validity of the judgment of the Gujarat High Court, but I have no doubt that its justification will be and should be tested in the Supreme Court. The decision to unseat Mr. Rahul Gandhi was a very unfortunate decision. The conscience of the nation has rejected that view, and I have no doubt that the Supreme Court, taking cognizance of the true intent of the law and of national sensitivities and constitutional sensitivities, will decide in its wisdom the way it will decide. There is no doubt that this decision will be challenged in appeal, and hopefully the decision of the Gujarat High Court will be reversed. It is very unfortunate that justice has not been prevailed. It is a murder of democracy. But still the entire country, all the opposition parties and the people of this country stand by Rahulji. He is a great leader who has been fighting across the country to unite country, walking on the streets of this country, fighting against corruption, fighting against unemployment, fighting against price rise. This is the love he has been given to the people of this country. So the BJP leaders are not able to tolerate. They want to block him from the parliament. They want him to unnecessarily create for his speech, which is nowhere heard. कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं।